Hello everyone, this is Dr. Purva and welcome back to our channel Bones and Babies, where we discuss anything and everything related to orthopedic and pediatric issues. Now today's topic is very interesting. Topic है how will you prevent mosquito bites for your children and thereby preventing mosquito-borne illnesses which occurs in your children. So first of all, let's discuss what are the diseases which are caused by mosquito bites. मच्छर के काटने की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो सकते हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट वी ऑल नो इज मलेरिया है, डेंगू है, फाइलेरियासिस है, चिकनगुनिया है, जिका वायरस है. ये सारे जो डिजीजेस है वो मॉस्किटो बाइट के वजह से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं थ्रू देयर ब्लड, एंड दैट इज हाउ ह्यूमंस गेट इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट बाइट and then getting the further illness. So this we talked about the diseases that are usually caused by mosquito bites. Now moving on, how will this disease present in us? Mosquito borne illnesses कैसे present करते हैं? They usually present with fever, जो high grade रहता है. The fever can be fluctuating, दिन में 1-2 बार आ सकता है. जैसे मलेरिया का जो भी फीवर है वो ठंड लगने के साथ आता है, बट अगेन नॉट नेसेसरीली कि फीवर टिपिकली ही आए, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम अक्रॉस ऑल डिजीजेस इज फीवर. नाउ व्हेन एसोसिएटेड विद फीवर यू हैव अदर सिम्टम्स, उस हिसाब से आपके डिजीजेस डिफरेंशिएट होते हैं, प्लस द रिपोर्ट्स दैट द डॉक्टर्स टेस्ट यू विद, उसके हिसाब से यू आर डिफरेंशिएटेड ऑन डिफरेंट डिजीजेस. बट अलॉन्ग विथ फीवर इफ यू हैव डिहाइड्रेशन, आप खा नहीं पा रहे हो, आपका वाइटली स्टेबल नहीं हो, ऑल दिस आर द रीजंस फॉर यू टू बी गेटिंग एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. सो दिस आर सम कॉमन प्रेजेंटेशंस इन विच दिस डिजीज इज प्रेजेंट. लेकिन आज का हमारा जो मेन टॉपिक है इज प्रिवेंशन. ये प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अभी वैक्सीन जापानीज एनकेफेलाइटिस के सिवा ये सारी चीज़ों की इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है. मलेरिया की हुई है फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, but still it's not as easily accessible and available. So the only best prevention policy is कि bite ना हो, mosquito bite ना हो. अब उसके लिए there are 2 things that we need to take care of. उसके लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना है. फर्स्ट इज कम्युनिटी लेवल पे ध्यान रखना है, सेकेंड इज एट पर्सनल लेवल. अभी कम्युनिटी लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे कि आपकी सोसाइटी हो, आप कोई सिटी में रह रहे हो, ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू टेक केयर. योर सोसाइटी इज नॉट अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज. छोटी छोटी जगहों पे पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए. द वेस्टेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एट रेगुलर इंटरवल्स. एक्यूमुलेटेड नहीं होना चाहिए. So that is a very important thing, because mosquitoes like to breed in a warm, moist, dirty environment, and this is a very good place for them, which can act as a breeding place. So that is a very important point that we need to take care of collectively as a community, कि वो हम places ही allow ना करें कि जहाँ mosquito breed हो. Now again, this is very difficult when it rains, and there are certain places where you cannot go and take out that water. So in such things, what will you do? Now at such times, as you might have seen your corporation and government doing fogging. Fogging is one of those methods कि जहाँ पूरी जगह पे फॉगिंग अलाउ करके इट किल्स मॉस्किटोज. दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ एंड इट किल्स देम इंस्टेंटली. अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? जैसे आपने देखा होगा, एक तो गवर्नमेंट की हेल्पलाइंस होती है, लाइक आई स्टे इन गुजरात एंड गुजरात गवर्नमेंट हैज दोस हेल्पलाइंस वेयर यू कैन कॉल देम एंड टेल देम कि यहाँ पानी भर गया है, देयर आर मॉस्किटोज ब्रीडिंग. सो दे विल सेंड यू अ पर्सनल whose work would be either fogging or spraying of that white powder, which is DDT. So these two are again the methods which are adopted at a community level to decrease the mosquito source. The other thing which is very important is creating an awareness. A lot of time we have seen कि awareness ही नहीं होती है.
हाँ मच्छर है तो क्या करें, अरे नहीं, अपनी सोसाइटी मीटिंग्स में वो बात आगे रखो, यू टेल देम इट्स नॉट ओके। अगर कोई बीमार होगा, द हॉस्पिटल कॉस्ट is much more, and more than the hospital cost, the effect that it will have on that individual, especially the kids, is much more. So these small things need to be taken care of at community level. Now कुछ भी कर लो, कुछ चीज़ें आप कम्युनिटी लेवल पे नहीं ही कर सकते हो, तो एट दोज टाइम्स व्हाट यू नीड टू डू इज पर्सनल प्रोटेक्शन। अभी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए भी तीन मेन चीजें जो यूजुअली हम सब यूज करते हैं। फर्स्ट इज दैट वेपोराइजर्स, जो हम प्लग में लगा के ऑन करके वी जस्ट स्लीप पीसफुली इन आवर बेड। ना उसका इफेक्ट इज टू वेरी लोकलाइज्ड एनवायरनमेंट, वो पूरा रूम कवर करे ऐसा भी जरूर बिल्कुल नहीं है। बट द मेन एडवांटेज ऑफ दैट इज इट्स अ बिट सेफर when used for kids, when you have kids staying with you, than the other coils and other methods. So but the thing that we need to take care of कि direct exposure उसके fumes का children को ना हो, so उसको चालू रखे रखो, रूम बंद करके रखो, and when you go to sleep, it's an enclosed room, you can switch it off and then your kids can sleep peacefully in that room. That is one of the method. The second is those coils, जो हम कछुए छाप coils that we used to use when we were small. Yes, those coils. Now they are very effective, but the fumes and the smoke are very harmful to the kid. Breathing issues हो सकते हैं, fire hazard भी है, आपने रख दिया, आपका ध्यान ना हो, it could cause fire. The child can go and touch it, again can cause burns. So it is harmful in that way. So you should be very careful if you are using that coil. Now the third thing that people usually do is pest control. Again, it's not an adequate method, not necessarily कि mosquitoes उससे आएंगे ही नहीं, and secondly the smell and the chemicals used could be again very harmful to your children. So the best method among all these three are the vaporizers that we use. Now this finishes with the three methods that we use in home, but the best method hands down still is using nets, mosquito nets, क्योंकि the first and most important advantage is कि वो हम न्यूबॉर्न में भी यूज कर सकते हैं। yes, अगर आपको न्यूबॉर्न बेबी हो तो 0 to 3 months में most of this repellents, these methods are very harmful to your newborn kid. In such place, the mosquito nets which are available are the most important tool to protect and prevent mosquito bites. That is the first thing. Secondly, roll-ons आ रहे हैं अभी. Now that I think is a good way, लेकिन again वो 3 months के above ही use करना है. They are usually safer when used above 3 months of the age of your child, जो क्लोथ पे और शोल्डर एंड नीचे सिर्फ रोल करके लगाना होता है. That is effective, but again for a very small period of time. So you cannot be like वो लगा दिया तो अभी एक दिन का पूरा खत्म हो गया. So that you need to take care about. So these are the small things which you need to take care about. So there are fewer, lesser or almost no mosquito bites in your children. And if there will be no mosquito bites, there are very less chances of your child getting mosquito-borne illnesses. Now all these things we already discussed. अभी what an issue is कि you as a parent will take all precautions और ये सब करोगे, but kids will not always listen to you. That will always be a problem. अभी kids क्यों नहीं सुनते हैं? The first and the most basic thing is कि उनको उस चीज़ का पता ही नहीं है. If your kid is old enough to understand, make him or her sit down and understand कि ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हो, ये क्यों करनी चाहिए, ये चीज़ क्या प्रिवेंट करेगी, उसके क्या एडवांटेजेस है. Once you make a kid understand, they'll follow this more religiously than you do, and they'll also impart this knowledge to their friends and will help them also do the same. Like आपने देखा होगा आपके बच्चा कि आपको बोल रहे हैं कि अरे मेरे ये फ्रेंड ने तो ये किया है, so we should try that. So that is one very important point that I would like to add before concluding this video. So that's it from my side. I hope you find this video useful and use these things in your life. If you have any queries,
you can comment in the section below, and I'll see you in the next video. Thank you.